Today we are going to learn neural control and coordination. As you know, the function of organ system in our body must be coordinated to maintain homeostasis. Coordination is the process through which two or more organs interact and complement the function of one another. For example, when we do physical exercise, the energy demand is increased for maintaining an increased muscular activity. The supply of oxygen is also increased. The increased supply of oxygen necessitates an increase in the rate of respiration, heartbeat, and increased blood flow via blood vessels. When physical exercise is stopped, the activity of nerves, lungs, heart, and kidneys gradually return to their normal conditions. Thus, the function of the muscles, lungs, heart, blood vessels, kidney, and other organs are coordinated while performing physical exercises in a body. The neural system, the endocrine system jointly coordinate and integrate all the activities of the organs so that they function in a synchronized fashion. The neural system provides an organized network of point to point connection for a quick coordination. The endocrine system provides the chemical integration through hormones. In this chapter, you will learn about the neural system of human mechanism of neural coordination, like the transmissions of nerve impulse conduction across synapse, and the physiological reflex of action. Neural system. The neural system of all animal is composed of highly specialized cells called neurons, which can detect, receive, and transmit different kinds of stimuli. The neural organization is very simple in lower invertebrates. For example, in Hydra, it is composed of a network of neurons. The neural system is better organized in insects, where a brain is present along with a number of ganglia and a number of neural tissues. The vertebrates have a more developed neural system. Human neural system. The human neural system is divided into two parts, the central neural system and the peripheral neural system. Now we will learn about it. The central neural system includes brain and the spinal cord, and it is the site of information processing and control. The peripheral nervous system comprises all the nerves of the body associated with the CNS, which is brain and spinal cord. The nerve fibers and PNS are of two types, afferent and efferent. Afferent means aane wali or towards the brain, and efferent means jane wali means from the CNS. The afferent nerve fiber transmit impulse from tissues, organs to the CNS, and the efferent fibers transmit the regulatory impulse from the CNS to the concerned peripheral tissues, organs. The PNS is divided into the two divisions called somatic neural system and the autonomic neural system. The somatic neural system relies impulses from the CNS to skeletal muscles, which while the autonomic neural system transmits the impulse from the CNS to the voluntary organs and smooth muscles of the body. The autonomic neural system is further classified into sympathetic system and parasympathetic system. Sympathetic means for emergency and parasympathetic means for non-emergency. I have written all the short forms or in my preparations, which found me very effective. So you can do the same. Visceral nervous visceral nervous system is the part of peripheral nervous system that comprises that comprises the whole complex of nerves, fibers, ganglia, and plexus, by which the impulses travel from the central nervous system to the viscera and from the viscera to the central nervous system. Neuron as a structural and functional unit of neural system. A neuron is microscopic structure composed of three major parts, namely cell body, dendrites, and axon. The cell body contains cytoplasm with the typical cell organelles and certain granular bodies called Nissel's granule. Centrioles are absent, so no cell division occurs in cyton. Short fibers, which branch repeatedly and project out of the cell body, also contain Nissel granule and are called dendrites. These fibers transmit impulses towards the cell body.
The axon is a long fiber, the distant end of which is branched. Each branch terminates as a bulb-like structure called synaptic knob, which contains or which possesses synaptic vessels containing the chemicals called neurotransmitters. The axons transmit nerve impulse away from the cell body to a synapse or to a neuromuscular junction. Based on the number of axons and dendrites, the neurons are divided into three types. That is, multipolar, which is with one axon and two or more dendrites, found generally in cerebral cortex. Bipolar, with one axon and one dendrite, which is generally found in retina of an eye. And last is unipolar, which is a cell body with one axon, only found in only found usually in the embryonic stage. There are two types of axon, namely myelinated and non-myelinated. The myelinated nerve fibers are enveloped with Schwann cells, which forms the myelin sheath around the axon. The gaps between the two adjacent myelin sheaths are called nodes of Ranvier. Myelinated nerve fibers are found in the spinal and cranial nerves. Unmyelinated nerve fibers is enclosed by Schwann cells that does not form a myelin sheath around the axon and is commonly found in the autosomes and somatic neural system. Now we will look over generation and conduction of nerve impulse. Neurons are excitable cells because their membrane are in a polarized state. Do you know why? The membrane of a neuron is polarized. Different types of ion channels are present on the neural membrane. These ion channels are selectively permeable to different ions. When a neuron is not conducting any impulse that is resting, the axonal membrane is comparatively more permeable to potassium and nearly impermeable to sodium ion. Similarly, the membrane is impermeable to negatively charged proteins present in the exoplasm. Consequently, the exoplasm inside the axon contains high concentration of K+, and negatively charged proteins has low concentration of Na+. In contrast, the fluid outside the axon contains a low concentration of potassium, which is K+, a high concentration of sodium ion, which is Na+, and thus form a concentration gradient. This concentration or ionic gradient across the cell across the resting membrane are maintained by three active transport ions by the sodium potassium pump, which transport 3 sodium outwards and 2 potassium into the cell. As a result, the outer surface of the axonal membrane possesses the positive charge while the inner surface possesses negative charge. I want to show this chart which is about myelinated and non-myelinated. You can write it as well. Here I've written both contain Schwann cells which may be myelinated or non-myelinated. The difference is that myelinated forms myelin sheath but non-myelinated does not form myelin sheath. Myelinated is found in spinal and cranial nerves and non-myelinated is found in autonomic and somatic neural system. This is very important for an aspect of NEET. It can be asked as a great MCQs. So keep in mind. Here I have also mentioned the gradient formation which requires active transport, and we can see here the 3 Na plus are transported out and 2 K plus are transported inwards. This is also an important line to remember of this paragraph. The surface is positively charged and the inner surface is negatively charged, therefore it is called as polarized. The electrical potential difference across the resting plasma membrane is called as the resting potential, which is around minus 70 millivolts. You might be curious. I know you are not, as you are the student also. So you might be curious to know about the mechanism of generation of nerve impulse and its conduction along an axon. No, we are not actually. हमें कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, राइट? हमें तो बस नीट देना है और इस एग्ज़ाम से छुटकारा पाना है, एमबीबीएस की सीट मिलानी है, माँ बाप का नाम रोशन करना है, वगैरह वगैरह। यही तो ख्वाब है, यही तो अरमान है, इसलिए तो पढ़ाई चल रही है, चलनी चाहिए। आखिरी कुछ दिन बचे हैं। चलिए शुरू करते हैं फिर से। You might be curious to know about the mechanism of generation of nerve impulse and its conduction along the axon. When a stimulus is applied at a site, let's say on point A,
On the polarized membrane, the membrane at a site A becomes freely permeable to Na+. This leads to the rapid influx of Na+, followed by the reversal of the polarity at that site. That is, the outer surface of the membrane now becomes negatively charged and the inner surface becomes positively charged. It is opposite as we saw before at resting potential. The polarity of the membrane at the site A and at the site A is thus reversed and hence depolarized. So it is called as depolarization of that site. The electrical potential difference across the plasma membrane at the site A is called that action potential, which is around plus 30 millivolts, which in fact is termed as a nerve impulse. At sites immediately ahead, the axon, let's say B, membrane had a positive charge on outer surface and negative charge on the inner surface. As a result, the current flows on inner surface from site A to site B. On the outer surface, current flows from site B to site A to complete the circuit of the flow. Hence, the polarity at the site is reversed and an action potential is generated at site B. Thus, the nerve impulse action potential generated at site A arrives at site B. The sequence is repeated along the length of the axon and consequently the impulse is conducted. The rise in the stimulus induced permeability of is extremely short-lived. When the stimulus is applied, actually, it says the permeability of any place is activated, but it is very short-lived. So it is quickly followed by the permeability of K plus. Within a fraction of a second, K plus diffuses outside the membrane and restores the resting potential. So K plus diffuses outside immediately within a fraction of a second, and it is again restored at resting potential of the membrane at the sites of excitation, and the fibers become once more responsive for further stimulation. And now the fibers are again ready for the next stimulation. This is the very important paragraph for the NEET aspects, as it can be asked in the statement questions, assertion reasoning, and various MCQs. We will learn through a diagram now. Actually, diagram is very important. मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. मान लो मैंने यहाँ चिमटी काटी या गुदगुदी की आपको, तो यहाँ का जो पॉजिटिव चार्ज था जो कि रेस्टिंग पोटेंशियल था वो अब अंदर चला गया. अब यहाँ अंदर पॉजिटिव चार्ज चला गया तो बाहर नेगेटिव पोटेंशियल ज़्यादा बढ़ेगा. बाहर नेगेटिव पोटेंशियल ज़्यादा बढ़ेगा, राइट, सिर्फ इसी पोर्शन में, क्योंकि इसी पोर्शन में मैंने आपको चिमटे काटी है या आपको गुदगुदी की है. अब आगे तो ऐसा कुछ नहीं है, मुझे यहाँ की चिमटी ब्रेन तक पहुँचानी है, तो ब्रेन तक ये इसके ज़रिए पहुँचेगी. ये रोड है इसका इम्पल्स का. अब जहाँ रेस्टिंग पोटेंशियल की बात है, आउटर पॉजिटिव इनर नेगेटिव, या स्टिमुलस मिला है इसको, इसलिए यहाँ इनर पॉजिटिव आउटर नेगेटिव. सो यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज फ्लो होगा फ्रॉम ए टू बी. अब यहाँ देख सकते हैं आउटर साइड में बी से ए जाएगा और ए से बी जाएगा इनर साइड में, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज फ्लो करता है. और ऐसे ही एक्सॉन के पूरे लेंथ तक वो चार्ज फ्लो करता रहेगा जब तक वो ब्रेन तक सिग्नल ना पहुंचे. और ये विद इन द फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड हो जाता है. एक्चुअली हमें लगे कि ये बहुत बड़ी लेंथ है वगैरह, ये ऐसा कुछ नहीं होता नहीं है. ये विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड पहुंच जाता है और ये फिर से अपनी रेस्टिंग पोटेंशियल में आ जाता है फॉर नेक्स्ट एंड रेडी फॉर द नेक्स्ट स्टिमुलेशन. तो अब हम पढ़ेंगे ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस. A nerve impulse is transmitted from one neuron to another through junction called synapses. A synapse is formed by the member of presynaptic neuron and postsynaptic neuron, which may or may not be separated by a gap called synaptic cleft. There are two types of synapses, namely called electrical synapse and chemical synapse. At the electrical synapse, the membrane of pre and postsynaptic neurons are in very close proximity. Electrical current can flow directly from one neuron into the other across these synapses. Transmission of an impulse across electrical synapse is very similar to impulse conduction along a single axon. Impulse transmission across an electrical synapse is always faster than that of chemical synapse. Obviously, electrical synapse हमेशा ज़्यादा तेजी से travel करेगा rather than chemical synapse. Electrical synapses are rare in our system, but electrical synapses are rare in our system
एंड मेजरली हमारे यहाँ केमिकल सिनेप्स ही होते हैं मेजरली. At a chemical synapse, the membranes of pre and postsynaptic neuron are separated by a fluid space called synaptic cleft. Do you know how the presynaptic neuron transmit an impulse or action potential across the synaptic cleft to the postsynaptic neuron? Chemicals called neurotransmitter are involved in the transmission of impulse at these synapses. The, the axon terminals contain vesicles called these. The axon terminals contain vesicles filled with these neurotransmitters. When the impulse or action potential arrives at the axon terminal, it stimulates the movement of the synaptic vesicles towards the membrane where they fuse with plasma membrane and the synaptic cleft. Central neural system. The brain is the central information processing organ of a body and acts as a command and control system. It controls the voluntary movement, balance body function of vital involuntary organs such as lungs, kidney, heart, etc. Thermoregulation, hunger and thirst, circadian, which is 24-hour rhythms of a body, activities of several endocrine glands and human behavior. It is also site for processing of vision, hearing, speech, memory, intelligence, emotions and thoughts. Human brain is well protected by skull. Inside the skull, the brain is covered by cranial meninges, consisting of an outer layer dura mater, a very thin middle layer arachnoid, and an inner layer which is in contact with brain tissue called pia mater. अब हम इसे याद कैसे रखेंगे इन तीन चीज़ों को? तो जो दूर है वो ड्यूरा, जो पास है वो पिया. दूर है ड्यूरा, पास है पिया, बीच में बच गया arachnoid. मेरा पिया पास है और वो दूर का ड्यूरा और arachnoid बीच वाला. ऐसे हम याद रख सकते हैं. The brain can be divided into three major parts: forebrain, midbrain, hindbrain. Forebrain. The forebrain consists of cerebrum, thalamus, and hypothalamus. Cerebrum forms the major part of human brain. A deep cleft divides the cerebrum longitudinally into two halves, which are termed as left and right cerebral hemisphere. The hemispheres are connected by a tract of nerve fibers called corpus callosum. The layer of cells which covers the cerebral hemisphere is called cerebral cortex and is thrown into prominent folds. The cerebral cortex is referred to as grey matter. बहुत ही important question है. Which of the following is referred to as grey matter? तो cerebral cortex हम लगा देंगे. ठीक. Due to its greyish appearance, the neuron of cell bodies or the neuron cell bodies are concentrated here, giving the color. The cerebral cortex contains motor areas, sensory areas and large regions. ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. जो जो इंपॉर्टेंट लगता है ना वो या नीट वालों ने और या एनटीए वालों ने हमें बहुत जगह दी है, या हम कुछ भी लिख सकते हैं जो हमें इंपॉर्टेंट लगता है. जैसे फोर ब्रेन में क्या आता है, तो सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस. जैसे हेमिस्फीयर बाय कनेक्टिंग नर्व फाइबर, जो दो हेमिस्फीयर कनेक्ट करती है वो कार्पस कॉलोजम. अगर और कुछ वो ग्रे मैटर है तो वो भी लिख सकते हैं. फिर कौन कौन से एरिया होते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स में वो भी लिखना चाहिए हमें. कौन कौन से एरिया है? मोटर एरिया, सेंसरी एरिया और एसोसिएशन एरिया. एसोसिएशन एरिया ऐसा एरिया है और लार्ज है जो नीदर मोटर है और ना ही सेंसरी है, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबल है कॉम्प्लेक्स फंक्शन के लिए, जैसे इंटरसेंसरी एसोसिएशन, मेमोरी एंड कम्युनिकेशन. फाइबर्स ऑफ ट्रैक्ट्स आर कवर्ड विद द माइलिन शीथ which constitute the inner part of the cerebral hemisphere. They give an opaque white appearance of the layer and hence called as white matter. ये भी important question है. Fibers are the opaque white appearance and hence called as white matter. The cerebrum wraps around structure called thalamus, which is the major coordinating center for sensory and motor signaling. ये भी important question है. Another very important part of the brain is called hypothalamus. अब हाइपो मतलब बिलो, यही होगा हाइपो या बेस. हाइपोथैलेमस लाइज एट द बेस ऑफ द थैलेमस. वो थैलेमस के बेस में इसलिए उसे हाइपोथैलेमस बोलते हैं. द हाइपोथैलेमस कंटेन्स द नंबर ऑफ सेंटर्स विच कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर, अर्ज फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग. अगर मुझे भूख लगी है, मुझे प्यास लगी है या मेरा बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल करना है तो ये सब काम हाइपोथैलेमस ही करेगा. It also contains several group of
neurosecretory cells. It also contains group of neurosecretory cells which secrete hormone called hypothalamic hormones. The inner part of cerebral hemisphere के जो अंदर का पार्ट है वो एसोसिएटेड होता है एमिगडाला और हिपोकैम्पस से। वो डीप स्ट्रक्चर्स होते हैं। अभी लाइन पूरी इंपॉर्टेंट है, हम फिर से पढ़ते हैं। द इनर पार्ट ऑफ cerebral hemisphere and a group associated deep structures like amygdala and hippocampus, etc., form a complex structure called limbic lobe or limbic system. लिम्बिक लोब या लिम्बिक सिस्टम 3 पार्ट्स से बना हुआ है, cerebral hemisphere, amygdala और हिप्पोकैम्पस, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। along with the hypothalamus, अब ये लिम्बिक सिस्टम जो है वो हाइपोथैलेमस के साथ रेगुलेट करेगा सेक्सुअल बिहेवियर, एक्सप्रेशन ऑफ इमोशनल रिएक्शन, एक्साइटमेंट, प्लेजर, रेज, फियर, एक्सेट्रा एंड मोटिवेशन। जो भी इमोशन होंगे यहाँ लिखे हुए वो सब लिम्बिक सिस्टम और हाइपोथैलेमस के संगम से बनेंगे। ये हो गया फोर ब्रेन का पार्ट। अब हम चलते हैं मिड ब्रेन की तरफ। ये बहुत ही छोटे पार्ट बचे हैं अब, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। मिड ब्रेन is located between the thalamus or hypothalamus of the forebrain and the pons region of the hindbrain. अब मिड ब्रेन मतलब कहीं तो मिडल में ही बैठा होगा ना, तो मिडल में किसके मिडल में, थैलामस या हाइपोथैलामस और पॉन्स रीजन ऑफ हिंड ब्रेन। अ कैनल कॉल्ड सेरेब्रल एक्वेडक्ट पासिस थ्रू द मिड ब्रेन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आ सकता है ये। अ डोर्सल पोर्शन ऑफ द, ये आप छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है कि ये डोर्सल है, वेंट्रल है, पोस्टीरियर है, एंटीरियर है, सुपीरियर है, इन्फीरियर है। इन सब चीज़ों से स्टेटमेंट में बहुत सारी गलतियां हो सकती है। करेक्ट है, इनकरेक्ट पूछा है, वो ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन, ऑप्शन ध्यान से पढ़ो, उसके बाद ही टिक करना। एनसीईआरटी पढ़ते वक्त इन सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इन्हीं चीज़ों में हमारी गलती हो सकती है और नीट वालों को पता है कि कहाँ गलती करने के चांसेस ज़्यादा है इनके। तो यह लिखा है कि डोर्सल पोर्शन ऑफ द मिड ब्रेन कंसिस्ट मेनली ऑफ 4 राउंड स्वेलिंग। अब ये नंबर भी इंपॉर्टेंट है, कितने, 4 राउंड स्वेलिंग्स लोब्स कॉल्ड कॉर्पोरा क्वाड्रिजम। अब इसे याद कैसे रहेंगे, 4 ही क्यों, अब 4 राउंड स्वेलिंग है इसलिए उसका नाम क्वाड आया है। क्वाड का अर्थ ही 4 होता है, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमा। सेरेब्रल एक्वेडक्ट, ये क्या है, कैनाल सिस्टम है और कैनाल है, पासिस थ्रू द मिड ब्रेन। अब हम चलते हैं हाइंड ब्रेन की तरफ। हाइंड ब्रेन comprises pons, cerebrum नहीं, cerebellum and medulla, which is also called as medulla oblongata. Pons consist of fiber tract that interconnect different regions of brain. Cerebellum has a very convoluted surface in order to provide the additional space for many more neurons. The medulla of brain is connected to the spinal cord. ये बहुत important है, medulla of the brain is connected to spinal cord. कौन सा पार्ट होगा जो स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्टेड होगा, तो मेडुला या मेडुला ऑब्लंगेटा भी बोल सकते हैं। मेडुला कंटेन्स सेंटर विच कंट्रोल्स रेस्पिरेशन, कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस एंड गैस्ट्रिक सिक्रीशन। अब ये मेडुला ही है जो हमारी रेस्पिरेशन, कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस और गैस्ट्रिक सिक्रीशंस को कंट्रोल करता है। अब ये लास्ट पार्ट भी इंपॉर्टेंट है। अब हाइंड ब्रेन यही सब खत्म होता है। अब ये लास्ट पार्ट, इन तीनों को मिलाकर क्या बनता है, 3 मेजर रीजन्स मेक अप द ब्रेन स्टेम। अब ब्रेन स्टेम किन किन चीज़ों का बना होता है, यह लिखा है, मिड ब्रेन ये पूरा, पॉन्स रीजन ऑफ हाइंड ब्रेन, मेडुला ऑब्लंगेटा ऑफ हाइंड ब्रेन, ये तीनों मिलाकर बनाते हैं ब्रेन स्टेम। अब ब्रेन स्टेम क्या कहा होता है, ब्रेन स्टेम फॉर्म्स द कनेक्शन बिटवीन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अब ब्रेन स्टेम की ज़रूरत क्या है, ब्रेन स्टेम क्या करता है, ब्रेन स्टेम हमारा कनेक्शन बनाते हैं किसके बीच, ब्रेन के बीच और स्पाइनल कॉर्ड के बीच। इसलिए तो हमारी पूरी स्पाइन ब्रेन से कनेक्टेड होती है, किसकी वजह से, ब्रेन स्टेम की वजह से। और ब्रेन स्टेम किस चीज़ का बना होता है, पॉन्स रीजन, मेडुला ऑब्लंगेटा और मिड ब्रेन। ये हो गया हमारा ब्रेन का पार्ट। बहुत ही ईजी है, यहाँ से कम 2 क्वेश्चन आने के चांसेस है। हर लाइन से क्वेश्चन बन सकता है, स्टेटमेंट बन सकता है, एसर्शन रीजन बन सकता है, डायग्राम के लिए भी आ सकता है, डायग्राम जरूर करके जाना। और आगे ये ईयर और आई वाला तो पूरा डिलीट ही हो गया मेरे ख्याल से। हम रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ेंगे। रिफ्लेक्स एक्शन ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी ये पढ़ने लायक है कुछ तो, ठीक है, पढ़ते हैं। You must have experienced a sudden withdrawal of a body part which comes in contact with object that extremely hot or cold, pointed or animal that are scary or poisonous. The entire process of response
to a peripheral nervous stimulation that occurs involuntarily, that is without conscious effort or thought, and requires involvement of part of the central nervous system is called a reflex action. Reflex pathways comprises at least one afferent neuron. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. कितने afferent neuron? One afferent neuron एटलीस्ट होना चाहिए उसके पास जो रिसेप्टर का काम करेगा, एंड वन इफरेंट न्यूरॉन. अब जैसे afferent न्यूरॉन, ए फॉर afferent, ए फॉर आने वाली रिसेप्टर, एंड वन इफरेंट जाने वाली, या फिर इफेक्टर और एक्सेप्टर बोल सकते हैं हम इसे. appropriately arranged in a series, और ये सीरीज में अरेंज होनी चाहिए. द इम्पल्स थ्रू अ डॉर्सल नर्व रूट, ये भी इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया है कि डॉर्सल शब्द भी इंपॉर्टेंट है. द इम्पल्स थ्रू अ डॉर्सल नर्व रूट इनटू अ CNS, which is central neural system, at the level of spinal cord. The efferent neuron then carries the signal from CNS to the effector. The stimulus and the response thus form a reflex arc as shown in the below. Knee jerk reflex. जैसे हम घुटने को मारते हैं एक पॉइंट पर तो हमारा पैर अपने आप आगे चला जाता है. ओके, ये डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है. अब हम देखते हैं एफरेंट मतलब जाने वाली. ये यहाँ से स्टिमुलस दिया, स्टिमुलस यहाँ से जाएगा डॉर्सल रूट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम की ओर, फिर यहाँ से वापस आएगा इफरेंट पाथवे से, यहाँ पे मसल पर हमारा स्टिमुलस देगा. स्टिमुलस देने के बाद हमारा पैर अपने आप थोड़ा आगे चला जाता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है डायग्राम पूछने के लिए आ सकता है. कौन सा इफरेंट है, कौन सा एफरेंट है, ये कौन सा डॉर्सल गैंग्लियन रूट है. ओके, ये वेंट्रल रूट होता है. ये डॉर्सल होगा तो ये वेंट्रल से आएगा, डॉर्सल से जाएगा वेंट्रल से आएगा, एफरेंट से जाएगा इफरेंट से आएगा. एफरेंट मतलब ए फॉर आने वाली और ई फॉर एग्जिट मतलब जाने वाली, ई फॉर एग्जिट, ऐसा याद रख सकते हैं आप. अब हम आखिरी पार्ट देखेंगे, सेंसरी रिसेप्शन एंड प्रोसेसिंग. हैव यू एवर थॉट हाउ डू यू फील the climatic changes in the environment? How do you see an object and its color? How do you hear a sound? The sensory organs detect all types of changes in the environment and send signals to the CNS, where all the inputs are processed and analyzed. The signals are then sent to different parts of the center of the brain. This is how you can sense changes in the environment. ये कहना क्या चाहता है? ये पूछना चाहता है कि हम अपने आसपास चीज़ें कैसे महसूस कर सकते हैं, कैसे हम कलर देख सकते हैं, या कैसे हम किसी अच्छी खुशबू सूंघ सकते हैं, कैसे पता चलता है ये खुशबू अच्छी है बुरी है. तो ठीक है, सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं? वी स्मेल थिंग्स बाय आवर नोज, टेस्ट बाय टंग, ईयर बाय ईयर, एंड सी ऑब्जेक्ट बाय. अरे भाई साहब, ये बहुत ही अलग बात कह दी है ना नीट वालों ने, वरना मैं तो कल से कान से सूंघ रहा था, आंखों से टेस्ट कर रहा था. कुछ भी है मतलब. ठीक है, ये तो बेसिक चीज़ है. ओके, द नोज कंटेन्स म्यूकस कोटेड रिसेप्टर्स. अब नोज में क्या होता है? म्यूकस कोटेड रिसेप्टर्स होते हैं विच आर स्पेशलाइज्ड फॉर रिसीविंग द सेंस ऑफ स्मेल and are called olfactory receptors. These are made up of olfactory epithelium that consists of 3 kinds of cells. The neuron of olfactory epithelium extends from outside environment directly into a pair of broad bean-sized organs called olfactory lobes or olfactory bulb, which are extensions of brain limbic system. मैंने आपको लिम्बिक सिस्टम अभी बताया क्या था, बताइए क्या था लिम्बिक सिस्टम? लिम्बिक सिस्टम 3 पार्ट से बना होता है. इनर पार्ट ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर, एमिगडाला विच इज डीप स्ट्रक्चर, एंड हिपोकैम्पस विच इज ऑल्सो डीप स्ट्रक्चर. ये सिर्फ या पढ़ने जैसी चीज़ें हैं, याद करने जैसी कुछ नहीं है खास. तो हम आगे बढ़ते हैं. बोथ नोज एंड टंग डिटेक्ट डिजॉल्व केमिकल्स. बोथ नोज एंड टंग डिटेक्ट डिजॉल्व केमिकल्स. ये इंपॉर्टेंट है कि बोथ टंग एंड नोज डिजॉल्व केमिकल्स ही डिटेक्ट कर पाते हैं. द केमिकल सेंसेस ऑफ जस्टेशन which is taste and olfactory which is smell are functionally similar to and interrelated. ये functionally similar है और interrelated भी है. The tongue detects taste through the taste bud containing the gustatory receptors. With each taste of food or sip of drink, the brain integrates the differential input from the taste buds and complex flavor is perceived. ये विजन आए और ईयर का हमें सिलेबस में नहीं है इस बार, और यहीं पर हमारा चैप्टर ख़त्म होता है. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए. कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए हो, कोई कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए. ओके, बाय.